मानसिक विज्ञान की इस कार्यशाला में आपका स्वागत है। हम बातें कर रहे हैं मानसिक विज्ञान के नए तरह की कुछ शिक्षा के बारे में। Why mental health education is the key to change the scenario of psychological challenges in our students। हमारे छात्रों में यदि आप देखें तो तरह तरह की समस्या और नई नई चुनौतियां हर दिन आती रहती हैं। कहीं एंजाइटी, कहीं डिप्रेशन, कहीं सुसाइड, कहीं हताशा, निराशा और जाने किन किन कारणों से वे परेशान हैं। ये बात सही है कि उन्हें अधिक सपोर्ट की आवश्यकता है, पारिवारिक संबल की आवश्यकता है और हर तरह से उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए। लेकिन जो चीज़ उनके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाएगी वो है मानसिक विषय की शिक्षा। मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक विषय की शिक्षा, मानसिक विज्ञान की शिक्षा यदि हम उन्हें दे सके तो उससे उनके जीवन में ऐसे परिवर्तन आ सकते हैं कि वे सभी स्वस्थ रहेंगे और अपने आसपास के सभी लोगों को मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करने में सक्षम होंगे। वही हमारे दे विल बी द एम्बेसडर ऑफ चेंज। द स्टूडेंट्स देमसेल्फ will raise the flag how to deal with challenges of life in a student population। ये बहुत बड़ी समस्या है। देश के लगभग 1/3 लोग कॉलेजेस में हैं, यूनिवर्सिटीज में हैं, अपने अपने जीवन में आगे जाने के लिए किसी न किसी तरह से संघर्ष कर रहे हैं। और इस संघर्ष की अवस्था में यदि हमें ये पता चलता है कि लगभग 10-12% लोग मानसिक बीमारियों से ग्रसित हैं, तो क्या ये चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? उन्हें इलाज की सुविधा मिलनी चाहिए, उन्हें हर तरह की काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन सब मिलना चाहिए, अवश्य मिलना चाहिए। और दिन प्रतिदिन इसमें बढ़ावा होता जा रहा है। टेलीमानस का प्रयोग देखें जो सराहनीय है। इतने शहरों में, करीब 30 शहरों में यह प्रयोग चल रहा है, जिसमें एक टेलीफोन के द्वारा छात्र मानसिक स्वास्थ्य के विशेषज्ञों से संपर्क ले सकते हैं, संपर्क में आ सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं और उन्हें सहायता मिलती है। मगर मुद्दा ये इस बात का नहीं है। सवाल इस बात का है कि यदि जीवन के बारे में जो विषय महत्वपूर्ण हैं, जिनसे परिवर्तन संभव है, उसकी शिक्षा उन्हें दी जानी चाहिए। और मानसिक विज्ञान की शिक्षा इसलिए अत्यंत आवश्यक है। द मेंटल हेल्थ एजुकेशन स्टैंड्स एज ए कॉर्नरस्टोन ऑफ पर्सनल वेलबीइंग। इसमें पहला परिवर्तन जो आएगा वो इंसान को अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने मस्तिष्क, मन, उसके सामंजस्य, उसकी जो अदाकारी है जीवन में, उसके बारे में उसे समझ मिलेगी, जिससे वो अपना जीवन, अपना व्यक्तिगत जीवन सुधारने में सक्षम होगा। न केवल समाज का फायदा होगा, बल्कि पहले व्यक्ति का फायदा होगा, फिर व्यक्तियों के समूह का फायदा होगा। Equipping individuals with essential knowledge and skills to navigate the complexities of human mind। So अगर हम जैसे फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, मॉरल साइंस पढ़ाते हैं, अनेक विषय हैं यूनिवर्सिटी में, कुछ घंटों के लिए यदि मानसिक विज्ञान पर ध्यान दिया जाए तो पहला काम ये होगा कि उनका व्यक्तिगत स्वास्थ्य, उनका व्यक्तित्व, उनके व्यक्तित्व का विकास, उनका मानसिक स्वास्थ्य, उनका शारीरिक स्वास्थ्य, ये तीनों बातें उनके समझ में आएंगी और यदि वे उसका पालन करेंगे तो उसमें आगे बढ़ते ही जाएंगे। दूसरी बात, जब भी मन की बातें चलती हैं तो लोगों के दिमाग में एक ऐसी तस्वीर उभरती है जिसका सामना लोग नहीं कर पाते।
लोग कहते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य मतलब मानसिक बीमारियां, और मानसिक बीमारियां मतलब वे रोगी जो कभी अच्छे नहीं हुए, वे पागल खाने में पड़े। ऐसा तो कुछ है नहीं। ये बात सही है, पहले के ज़माने में सिर्फ मेंटल हॉस्पिटल्स थे जिनमें इलाज होता था। बहुत से लोग ठीक हो गए, उनके घर गए। लाखों लोग जिनके बारे में कोई लिखता नहीं, पढ़ता नहीं, कोई कहता नहीं कि मुझे बीमारी थी, मैं ठीक हो। लेकिन जो लोग अपने घर नहीं, जिन्हें उनके परिजन नहीं ले गए और उन्हें किन्हीं परिस्थितियों में लंबे समय तक अस्पतालों में रहना पड़ा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वे अपने मानसिक अवस्था की वजह से मानसिक बीमारियों के अस्पतालों में पड़े हुए थे। जी नहीं, वे कारण बहुत ही अलग थे। अनेक सामाजिक, पारिवारिक और लीगल कारणों की वजह से वे वहाँ फंसे हुए हैं, और आज भी फंसे हुए हैं, बात सच है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जब भी मानसिक स्वास्थ्य की चर्चा हो तो मानसिक बीमारियों की एक भद्दी तस्वीर सामने रख दी जाए और बच्चों को डरा दिया जाए। इस स्टिग्मा, इस कलंक, इस मिसकंसेप्शन से बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, और वह है मेंटल हेल्थ एजुकेशन। दैट विल डिसमिनेट द मिसकंसेप्शन। ये फायदा है उसका। फिर अगर हम कहते हैं कि जनसाधारण में इस विषय के बारे में जानकारी देना है, इफ वी हैव टू रेज अवेयरनेस, हाउ? इट्स ओनली थ्रू द एजुकेशन। And who is the torch bearer of education? None other than the student, the young boys and girls. They are in the stage that they will assimilate the knowledge and transmit it to others. They are the change maker, and therefore, whether it is school or university or formative years, mental health component must be part of their curricula. Each and every book should have few pages about Mansik Swasth. Mental health education is indeed fundamental to our well-being and survival as individuals and as a society. By educating people about mental health, we empower them. We empower them for what? We empower them to recognize when they need help and guide them. We empower them to recognize if their loved ones, family people have any problem. Who is going to identify? We say that if you identify the problem early, you are 100% curable. Whether it is cannabis-induced psychosis, whether it is alcoholism, or it is depression or phobia. If you can catch them young in an early stage, the outcome is fantastic. But who will do it? And how will they do it? If they do not have the knowledge and skill and information about what is normal, what is abnormal, what is normal content of thinking, what is abnormal content of thinking, what is normal sleep, what is abnormal sleep. If this piece of information, and how will they get this piece of information? In which family we have this kind of discussion, and whether parents are aware? No. It is only through formal and informal education that we can impart this information. Education breaks down stereotyping and misconceptions surrounding mental health issue. जन जागरण के लिए शिक्षा की आवश्यकता है. Understanding the basics of mental health helps people to reduce stigma and produce empathy, promote empathy towards those who are suffering from mental health challenges. Early intervention allows for timely intervention and support, improving chances of successful treatment and recovery. That's the advantage. So mental health education is going to help the student deal with their problem. They can identify early. They can decimate the stigma and misconception. They can promote positive mental health. Education equips individuals with the ability to recognize signs of mental health problems, either within themselves or in others. Mental health education provides essential knowledge about mind, brain, and various health conditions. It is exactly like knowing what is the role of our liver, spleen, heart, blood pressure, etc., etc. Similarly, each and
Everyone needs to know what is mood, what is memory, what is concentration, what is judgment, what is thinking, what is creative thinking, what is critical thinking, and how to promote it, how to get it better. Mental health education often includes teaching coping skills, resilience building, and teaching various measures to promote personal capacity. Students can increase their psychological reserve by mental health education. Mental health issues have a significant societal and economic impact. The disability of mental disorder is huge. Just imagine people lying depressed, unable to go to work for months together, they're dysfunctional. And the moment you treat them, they're all fine. They go back to their job, their employment, their shops, their office, and make the same amount of money as they were making before. Education can also focus on preventive measures and strategies for maintaining good mental health. The concept of good mental health is the fundamental for quality of life, for living life with sanity. This includes stress management techniques, mindfulness, and yoga, meditation, so on and so forth. A number of interventions which are culturally tuned, acceptable, but discipline is required. It is only through proper channel of education, dedicated courses, certificate course, new course, online courses, that we can impart this body of knowledge. Education, knowledge about mental health empowers individuals to take control of their own self. They will identify when I'm slipping into mood problems or an addiction, and they'll save themselves. It encourages self-reflection and proactive steps towards mental wellness, fostering a sense of agency and control over one's mental health. Mental health education can lead to a decrease in prevalence of mental disorders too, because it is only through education. When you educate people, they identify better, they provide access to care, people get fast treatment and they are fine, and the overall incidence of mental disorders is likely to reduce. Education not only empowers individuals to recognize the need for help, but also guides them towards myriad of supportive resources. And therefore, mental health education should be part of curriculum in each class, whether it is 7th, 8th, 9th, 10th, university, any curricula, any management book, taxation book, science book, medicine, planning, all training programs must have component of understanding mind sciences, recognizing mental disorders, self-help, and self-development, the practices of yoga, Gayatri Mantra, and meditation. My course on mind sciences will bring all this to you. Look forward to meet you.